Okay, so in this type of error, the program is compiled, executed successfully, but doesn't give the desired output. Then if I pass if A greater than B, so I am define here, suppose system dot out dot println, so it is display you that suppose A is greater, or else B is greater. So either A is greater or B is greater. ए दुईटा भितर से मते गोटे जिनस शो कर। अच्छा एबे मु जदि ए रो वैल्यू 7 नेबी, बी रो वैल्यू 4 नेबी, देन इट इज गिविंग यू मी द रिजल्ट। और एल्स मु जदि ए रो वैल्यू 3 नौची, बी रो वैल्यू नौची 8, then it is giving me the output. But मु जदि एठी ए रो वैल्यू नेबी 5, जदि बी रो वैल्यू नेबी 5, then in that scenario it doesn't give me any kind of output. मते एठी कोनोसी आउटपुट देखेबनी, कारण ए इक्वालिटी चेक करिया पई मु एठी कोनोसी कंडीशन देइनी। तो हियर इट इज शोइंग यू द लॉजिकल एरर। बुझियला? आगे सर। Then next is runtime error. In this type of error, the program is compiled successfully, but the time of execution it shows an error. That means my program ta compiled haba, but at the time of execution it shows an error. Suppose if I divide, suppose C equals to A by B, and here if I pass A equals to 10 and B is equals to 0, so here it shows an error because you cannot divide a number by 0. गोटे नंबर टाको मो 0 रे डिवाइड करि परिबि नै, तो सेठी मते कोन देखियो ना रन टाइम एरर मते शो करिवो। So we cannot divide a number by 0, so it's showing you the run time. Okay, and another example you can give, if you want to open a file but the file
is not present मु गोटे फाइल टाको ओपन करने को चाहूँगी किंतु से फाइल टा ही मो पाखरे नाही तो एटी शो करिवो मोर रन टाइम एरर so these are the different type of error that we handle and all the exception it belongs to the runtime error जहाँ भी सब exception আছে exception means that it is called as a runtime error means you are not expecting that kind of thing is happen with you then it is happen suppose मो बाटर जाउची accident हैला so I am not expecting that the accident will be happen with me और मो कहि परिबी जदी गाड़ी रे जाउची मोर बाइक टा पंक्चर हे गला so that is also called as your runtime error so these are the situation where the exception is arises so exception belongs to your runtime error so all the exception it is belongs to your runtime error an error that occurs at runtime it have the abnormal behavior which gives the unpredictable result it disrupts the normal flow of your application मोर application रा normal flow को disturb करिवो बा मु जेमति चाहूची आउटपुट टा पाइबा पई से आउटपुट मते शो करिवो नै एटा हला मोर रन टाइम एरर then we are using here all exception and error in the Java it comes from throwable class so throwable is the base class where all exception and error has comes okay so throwable is a base class where all exception and error has comes so throwable lo mora error aschi then exception aschi then in between exception bitare mor kon asibo na runtime exception SQL exception and IO exception SQL exception kon मु जते बेले मोर एप्लिकेशन टा को इंटरैक्ट करिवि डेटाबेस सहित तो से समय रे मोर SQL एक्सेप्शन अराइज होबो माने मोर जदि डेटाबेस टा प्रेजेंट नथिबो आ से जो टेबल रे मु चाहूची डेटा टा इंसर्ट करिया पई से टेबल टा ही मोर प्रेजेंट नथिबो किबा मु जते बेले डेटा टा इंसर्ट करबा को चाहूची डेटाबेस सहित जो कनेक्टिविटी अछि सेटा ऑटोमेटिक क्लोज हे जिवो तो से जगह रे मोर SQL एक्सेप्शन अराइज हो IO एक्सेप्शन केते बेले अराइज हो ना जते बेले मो फाइल इनपुट आउटपुट रो किछि काम करूची से समय रे जदि मो फाइल टा प्रेजेंट नथिबो सेते बेले मोर IO एक्सेप्शन टा जनरेट हो so here it is called as the different type of exception we have so mainly three category of exception we have one is your unchecked exception another is checked exception हमारा दीटा एक्सेप्शन अछि गोटे होची unchecked exception another is checked exception and throwable is the base class for all error and exception so throwable under रे मोर error भी आसीबो आउ exception भी आसीबो बुझियला आगे सर so what is that unchecked and checked exception checked exception is just like that when you are in a rainy season when you are going out from your home so there is a heavy rain and at that timing your mother is ensuring you that you are taking a raincoat माने माँ तुमको चेक करिवे जे तमे रेनकोट टा नै छ कि नै बाहर को जाउ छ टिफिन टा नै छ कि नै तो मदर इज चेकिंग ऑल दैट पार्ट ओके वर्षा को तो अटकई परिबेनी बट से सिचुएशन टा को हैंडल करिया पे हमें रेनकोट टा हमें नै छ कि नै घरे चेक करिवे आ गोटे होची हमर अनचेक्ड एक्सेप्शन माने कहि परिबा हमें हॉस्टल रे रहउचे कॉलेज को जीवा तो सेठी आमे निजे होचु निजर जज तो मु
रेनकोट टा नेबी कि नाही ई करी कि ओदा है कि जीवी सेरा मो ऊपर डिपेंड करूची माने एरर टा आसीबो किंतु मु अवॉइड करबी केमती ना मु सेटा in my way you have to check, so there is nobody is there to checking you that you have to follow that kind of thing or not. बुझी होची जेमती कि आमे कहि परिबा जो आमे जते वाले बेसिकली भुवनेश्वर ट्रैवल करूची किबा कटक सिटी रे ट्रैवल करूची सो that means where the traffic rules are very much strict, so we obey the rules, means we wear the helmets. But when you are moving in the village and in your what like local area, so in that way we are not what bother about that. पाखु जिबा हमें non ले भी चलिए. So when you are checking that मु बाहर को जाऊँची, maybe I will face the accident, so I will have my helmet with me, so that you your parents are judging you and monitoring you whether you are taking or not. Traffic police in the highway is checking you that you are wearing the helmet or not. Unchecked exception means that it is bound to wear the helmet, but that is depend upon you whether you have to use or whether you don't use. So there is no person is there for checking you out. So in the program, that kind of situation is called the unchecked exception. Okay, so these are the two type of exception we have. बुझियला? I guess so. मनोरंजन? I guess sir. मनोरंजन बुझी होची? Okay. Now, so I will describe what is that unchecked and checked exception. First is checked exception. स्क्रीन टा देखा जाउची? आज्ञा. आगे सर. Yes sir. मनोरंजन बुझी पारछो तो? So checked exception is what? Checked exception are the subclass of exception class. Exception, like we know that throwable is the base class for all exception. So in the checked exception are the subclass of exception. With the subclass of exception excluding error and its child class, and runtime exception and its child class. So except runtime exception and child class and error its child class, other exception is called as the checked exception. As the name suggests, checked exception are checked by the compiler. So it is checked by the compiler. Here I am given an example. Your mother is working as a compiler. If the programmer generates a checked exception within a method with the help of throw keyword, so sometimes by requirement of our application, we define the checked exception. We define the exception. So how we have to define in according to our exception? Exception माने हमें पढ़ले कौन? जब प्रोग्राम रे किसी unrelated behavior हुए तो exception आसीबो. तो हमें जानी सुनी किंतु गोटे exception define करिवा. एटा जेमते हमें गोटे example नबा.
that now the situation we have unlock 5.0. So in the 5.0 there is some kind of sector has opened. जेमते कि center कही देला जे there should be a what temple will open and all the school and colleges are open, but there is some state are there, they're not opened it. Okay, so it is it gives the what rights to the state government, they have to decide what to do. ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନଲକ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେ ସମୟରେ ଆମର ସଟଡାଉନ୍ ବି ହେଉଥିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଟିରେ 7 दिन 8 दिन 14 दिन ଏମିତି ସଟଡାଉନ୍ କରିଦେଉଥିଲେ ମନକୁ ମନ. So that means what? In centrally it is open, but depending upon the situation, state government has applied the rule for the shutdown and lockdown. So sometimes the exception is arises depending upon the what your application means, which is a true exception. Some exception are present that we have to define or user has to define based upon their requirement. More application requirement को देखि कि मु निजे गोटे exception मु define करिवे. तो if the programmer generate a checked exception, यदि programmer निजे गोटे checked exception generate करूची by using a throw keyword, then the programmer is bound to handle that exception within that block. And the programmer bound है जीवो से exception टाको handle करिया पाए within that block. Otherwise, the program is terminated at the compile time. If the programmer generate a checked exception and not handle it within the block where the exception is generated, then the programmer pass the exception to the caller of the method by the help of throw keyword. Okay, so sometimes what happen, इटा गोटे आम एग्जांपल नहीं परिबा. Yes, central government has defined the unlock, but state government has also given a unlock, but there is some sector is present, the state government is dependent upon the central government. से कहबो जे सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ रूल करबा हमें से रूलटा मानिबो और हमें से जो रूल ओटा डिफाइन करबा हमें से रूलटा मानिबो, हमें निजस्व रूल किसी बनैबा. तो एई सिचुएशन टा होची सेमती गोटे जेतेबेले प्रोग्रामर कोन करिवो निजे गोटे एक्सेप्शन हैंडल करिवो. यदि प्रोग्रामर से एक्सेप्शन टा को निजे ही हैंडल करिवो, जदि से निजे हैंडल न करि पारुची विद इन द मेथड, ताले कोन हबो से एक्सेप्शन टा कोठी हैंडल हबो ना जोठी मेथड टा मोर कॉल हबो. मेथड टा मोर कोठी कॉल हबो, मेन मेथड भीतर कॉल हबो. हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बने के मेथड रे हमें कॉल करिबा, तो सेही मेन मेथड भीतर मते एक्सेप्शन टा को हैंडल करिबा को पड़िबो. जदि मु मेन मेथड भीतर एक्सेप्शन टा को हैंडल न करूची ताले मोर प्रोग्राम टा ऑटोमेटिक टर्मिनेट हे जीवो, ऑटोमेटिक बंद हे जीवो. बुझी हला चेक्ड एक्सेप्शन काम. Yes, sir. मनोरंजन संगीता. Yes, sir. Yes, sir. आउ गोटे होची अनचेक्ड एक्सेप्शन. आउ जहाँ रहिला एरर इट्स चाइल्ड क्लास, रन टाइम एक्सेप्शन एंड इट्स चाइल्ड क्लास आर ट्रीटेड as unchecked exception. As the name suggests, unchecked exception is not checked by the compiler. तो compiler द्वारा माने चेक हेबेनी. When the programmer generate an unchecked exception within a block, the program is bound to handle the exception within the block. Otherwise, the program is terminated at the runtime. If the programmer doesn't handle the exception within that block, the compiler doesn't forces the programmer either to catch the exception or declare to the throw clause. तो ये unchecked exception कौन होगा? जदि गोटे प्रोग्रामर गोटे एक्सेप्शन टा डिफाइन करूची आउ से प्रोग्रामर जदि ताको हैंडल न करूची, कंपाइलर एठी चेक करिवने जे तमे हैंडल कलो कि नहीं. सो दैट इज डिपेंड अपॉन यू. जेमते कि कहला ना जेते बळे अनलॉक गाइडलाइन सब आस्तला से समय
स्टेट गवर्नमेंट कौन करथले ना किछि डिस्ट्रिक्ट टाको से माने लॉकडाउन करथले जेमति कि खोर्धा कटक हेपड़े राउरकेला ये सब को लॉकडाउन करथले किंतु तापर रूल पास हला कोन ना स्टेट गवर्नमेंट निज मन इच्छा लॉकडाउन करि परिबे नाही जेतरा कहबे करि परिबे नाही माने स्टेट गवर्नमेंट से रूल टाको मानिबा को पड़िबो सेटा हला चेक्ड एक्सेप्शन किंतु जे पर्यंत से माने मानु नथले सेटा हला को अनचेक्ड एक्सेप्शन से माने निजर मन इच्छा रे काम करथले कोटा को शट डाउन करिवे कोटा को लॉकडाउन करिवे गोटे गोटे जगह रे सरपंच माने भी हमको शट डाउन करि दउतले बुझी होछि त से जगह रे होतला कोन ना अनचेक्ड एक्सेप्शन सेठी केही चेक करबा को होनता से माने मनमुखी काम करथले तो अनचेक्ड एक्सेप्शन इज लाइक दैट when the programmer is generating an exception and they are not handle it, the compiler doesn't forces them that to handle it, but check exception re the compiler is forcing them to handle it. बुझिला? आगे सर। Yes, sir. So here it is given that the types of unchecked exception, runtime exception and error, it belongs to the unchecked exception. So what are the unchecked exception are present? One is array index out of bound exception, null pointer exception, arithmetic exception is called as the unchecked exception. Checked exception कौन रहिबो? Exception except runtime exception and it is handled with the try and throws clause. So and unchecked exception is handled with the try and catch. Then there is a question, what is that try and catch block? Exception means what? Unexpected the error will come in your program. When unexpected the error will come in your program, that doesn't mean that you are not handling the exception. आमे जानी छे जे जते बेला आमे रास्ता रे जाउ छे जो नॉर्मली आमे जो रास्ता रे एक्वेंटेड अच्छे आमे जानी छे सपोज को जगह हेलमेट चेकिंग होची तो आमे ऑटोमेटिक कोन कोच वी वेयर द हेलमेट एट दैट पर्टिकुलर बट ट्रैफिक पोस्ट ओके बट सडनली कोन हुए बेले बेले गोटे अनएक्सपेक्टेड जगह रे भी से माने आसी जान मतलब तापरे आ गोटे होची आमे देखि परिबा ओरा वर्षा सीजन अछि so it may be happen that आज दिन बेला बहुत खरा होची आमे एक्सपेक्टेड करने जे राति रे वर्षा हबो बट वर्षा स्टार्ट हे गला तो आम पाखरे वर्षा टाको तो आमे रोकी परिबा नै किंतु से सिचुएशन में हमको घर को जीवा को हेले आम पाखरे छता किबा रेनकोट थिबा दरकार then we are handling that situation. Try and catch block is just like that. So you know when you are writing a program, you know where your exception is arises. तमे जानि छ जे तमे तोरा प्रोग्राम लिखु छ तमे जानो छ जे कोठी मोर एक्सेप्शन आसी पारे तो तमे धर 500 लाइन्स ऑफ कोड लिखु छ सपोज 100 लाइन रो ने कि 200 लाइन भितरे तमे एक्सपेक्ट करू छ जे आ भितरे एक्सेप्शन आसी पारे तो you have to put that lines of code into the try block. मो try block भितरे से lines of code टाको मु लिखिबे तो try block कौन करिवो से लाइन से स्टेटमेंट टाको गार्ड करिवो बा जज करिवो मोर एक्सेप्शन ता भितरे आसु छ कि नै तो try block परे मु लिखिबे catch block contain the exception class name मु एक्सपेक्ट करिवि जे मोर को एक्सेप्शन ता आसी पारे जेमते कि वर्षा दिने मु एक्सपेक्ट करूची जे वर्षा आसीबो त सेति पे मु रेनकोट किबा अम्ब्रेला मो पाखरे रखुची
तो कैच ब्लॉक रे मु कोन रखिबी ना जदी वर्षा आसुची कैच ब्लॉक रे मोर सेही सिचुएशन टा को हैंडल करिया पई रेनकोट किबा मु अम्ब्रेला यूज करले तो सिमिलर वे when you are writing a lines of code you expecting that in that particular line there may be a chance of exception so you put that lines of code into the try block mo try block bitare se lines of code ta ko mo include karibe तापर जेतले include करिवे ऑटोमेटिक कोन आसीबो तापर कैच ब्लॉक appear होबो तो कैच ब्लॉक रे कोन होबो जो एक्सेप्शन ता मु एक्सपेक्ट करू छी सपोज मु एरिथमेटिक ऑपरेशन करू छी मु एरिथमेटिक एक्सेप्शन ता एक्सपेक्ट करू छी तो मु सेठी एरिथमेटिक एक्सेप्शन पुट करबी कैच ब्लॉक भितरे तो कैच ब्लॉक रो काम कोन ना इट इज यूज्ड टू रीट्राई द ऑपरेशन मु जो ऑपरेशन करू छी ताको आउथरे रीट्राई करिवो and giving me all the alternate solution and it is not close your program abnormally तो normally कौन हुए जते बेले देखिबो तुम सिस्टम टा हैंग हे जिवो ऑटोमेटिक तुम्हारा प्रोग्राम टा किबा आउ किछि रेस्पॉन्ड जते बेले न करियो हमको शट डाउन करिया पड़े सेते बेले जदी कोनोसी फाइल टा तमे सेव न करिसो देन योर फाइल इज डिस्ट्रॉयड so it is used to what na gracefully exit and return means it is not abnormally close your application catch block must not be empty it will not be empty it gets a reference to the java.lang.exception तो कहा अंडर आसीबो java.lang.exception ऑब्जेक्ट है सेटा डिफाइन होबो देन जनरल पर्पस ऑफ कैच ब्लॉक एटा बुझियला ट्राई एंड कैच ब्लॉक रो काम आगे सर general purpose of catch block it cannot deal with the every possible error मो पाखरे जदी रेनकोट आ अम्ब्रेला अछि तो आई विल ओनली हैंडल द सिचुएशन इफ देयर इज ए रेन जदी जोरे पवन दोछि ताले रेनकोट आ अम्ब्रेला कोनोसी काम रे लागिबोनी so catch block in the catch block when you define any kind of exception handler class name it is not handle all the type of exceptions से सब प्रकार exception टा को handle करि परिबो नाही so it cannot deal with every possible error it should not catch the base type of exception सेति पई जदी मु 100 लाइन लिखुची मु 100 लाइन भितरे जदी एक्सपेक्ट करूची जे सेठी मोर देन वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन आसी पारे जेमते कि जतरा बात्या सूचना आसे तो नॉर्मली पवन होइबो आ वर्षा हो तो दीटा सिचुएशन आसे पवन रक्षा करिया पय हेले मु कोनोसी घरे आश्रय नेबी क्लोज रूम रे किबा भलो घरे आश्रय नेबी तो आउ वर्षा पय हेले छता तो काम दबनी तो मते घर ही दरकार तो जोटी मु एक्सपेक्ट करूची जे मोर देन वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन आसीबो तो से जगह मु मल्टीपल कैच ब्लॉक इन ए सिंगल ट्राई ब्लॉक रे मु डिफाइन करि परिबे then next is your finally block is a block if your exception is arises it is execute if your exception is not arises then also it is execute जदि मोर exception टा arise होबो सेते बेले भी execute होबो जदि मोर exception टा arise होउनी बा नाही सेते बेले भी मोर finally block execute होबो then why you are using finally block finally block is used to closing the open resource माने कोन ना predefined class object जेमति कि हमें स्कैनर क्लास गोटे डिफाइन करथले इनपुट नवा पय यूजर थारो तो तार गोटे ऑब्जेक्ट डिफाइन करले तो स्कैनर इज ए प्रीडिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट से स्कैनर क्लास टा को हमें क्लोज लिखुथले sc.close गोटे यूज करथले फॉर क्लोजिंग दैट ऑब्जेक्ट सो सेति पय माने किछि ओपन रिसोर्स टा को क्लोज करिया पय हमें फाइनल ब्लॉक रे क्लोज मेथड यूज करबा माने जदि मोर एक्सेप्शन अराइज हला जदि मोर एक्सेप्शन हला ताले से क्लोज करिवो जदि मोर एक्सेप्शन न भी आसिला तारे मोर काम सरी गला मु भी क्लोज करिवे जदि एक्सेप्शन आसिला क्लोज करबी एक्सेप्शन न आसिले भी मु क्लोज करिवे इन द बोथ ऑफ द cases I have to use a close method so finally block is like that it closes the open resource
execute with or without an error in the try block. Try block रे जदि error आसीबो execute हबो, error जदि न आसीबो भी execute हबो. It always execute after the catch block. Catch block ପରେ सेटा execute हबो. It may generate an exception. Finally block रे क्वचित हमारा exception आसी पारे. Maybe exception is generated. Then try and catch block हमें केमती define करिवा. Suppose मो main method with किसी program रखले. Suppose I am expecting that some more exception will come. So मो try block भितरे code सब लिखिबे. आ भितरे मोर code लिखा हो. Then जदि मोर exception आसिला, then here I use the catch block. Suppose I am expecting here some kind of arithmetic exception will happen. तो जो exception आसीबो मु से exception टा define करिबे. Suppose arithmetic exception. तो try block भितरे जदि कोनोसी arithmetic operation मु करूची ता भितरे जदि किछि exception आसे ताले arithmetic exception handle हबो. ईटा हला मोर object, predefined class object. So it is handle the try and catch block exception. Next is what? तो आमर मन रे क्वेश्चन आसीबो एमती केते प्रकार एक्सेप्शन अछि. फाइल आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन. एते सब मन रखी आरए इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. आरए इंडेक्स रो जदि अधिका एक्सेप्शन हमें पास करिवा ताले हमर आसीबो. तो सबटारो शॉर्ट फॉर्म होउची. तो प्रथमे तमे कोन करिवो ना एक्सेप्शन ब्लॉक डिफाइन कर दबो. जदि मु खाली exception keyword define करिवि. So exception is used to handle all the type of exception and it is the base of all the exception handler. Okay, तो ये सब प्रकार exception हमको handle करि परिबो. एटा होची catch block रो काम, exception रो काम. तार ए जो exception मु लिखिबि से मोर पर्टिकुलर को exception टा आसीबो एटा मते शो कर दबो. ए एक्सेप्शन टा मु लिखले से मते देखाई दबो जे मोर एरिथमेटिक एक्सेप्शन आसु. तापर लेटर मु एटी चेंज करि परिबि, स्पेसिफिक एक्सेप्शन दे परिबि. जोठी मु जानि पारुनी जे मोर को एक्सेप्शन आसीबो त मु एठी बेस एक्सेप्शन डिफाइन करिबि. आउ जदि मु जानि छी जे ए ट्राई ब्लॉक भितर दुईटा एक्सेप्शन आसी पारे. गोटा होची एरिथमेटिक एक्सेप्शन, आ गोटा होची सपोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. देन मु मल्टीपल कैच ब्लॉक डिफाइन करि परिबि. सपोज मु एठी लिखली फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ए. जदि मु फाइल टा को ओपन करबा को चाहू छी किंतु से फाइल टा ही मोर प्रेजेंट नाही ताले एठी मोर देखेबो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. बुझियला. तो एटा मल्टीपल जेतरा एक्सेप्शन आसीबो मु सेतरा कैच ब्लॉक एठी डिफाइन कर परिबे. बुझियला. आज्ञा सर. Then after the try and catch, then I have to define the finally block. So finally block last row. If exception is arises, then finally block execute. If your exception is not arises, then also your finally block is execute. Exception asile finally block execute habo. Exception no asile भी मोर finally block execute habo. Both of the cases रे finally block टा मोर execute habo. बुझियला. आज्ञा सर. Okay. So it is we cover up to finally block. So in the next class we start with the try with resource statement. Okay, so kali eta padiba try with resource statement. Okay.
चलो बाय। थैंक यू सर।